morning, students. In this class, we are going to discuss another property, colligative property, that is the depression in freezing point. What are colligative properties? The properties which depends on the number of the solid particles irrespective of their nature. I had once again written this definition. All those properties which depends on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles in the solution. So we had discussed two colligative properties. First one was relative lowering of vapor pressure and the next one was elevation in boiling point. Whenever a solution is made from the solvent by adding non-volatile solute, some of the properties are observed which depends on the number of the solute particles. They do not depend on the nature of the solute particles. Okay, so now in continuation we will see the third one, depression in freezing point. Okay, so let's start again with the graph. Here we will draw again a graph between the vapor pressure on the y-axis and the temperature on the x-axis. See students, here we have to discuss what is the freezing point. So first we will take the freezing point here. Okay, here I had drawn a graph. This is the liquid solvent. This is the graph of the liquid solvent. Suppose वहाँ पे temperature high है, जैसे जैसे आप उसका temperature low कर रहे हैं, at particular temperature TF naught, for the pure solvent we are talking, at a particular temperature TF naught, that particular solvent, it starts freezing. Okay, and here this is a graph for frozen solvent. Okay, so first point, again what we are writing, vapor pressure is directly proportional to temperature. जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. सेकेंड पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will always be lower than pure solvent. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा लोअर होगा प्योर सॉल्वेंट से. सो हियर आई ड्रॉ लाइक दिस. ओके, दिस इज फॉर द सॉल्यूशन. अच्छा, लाइक इन द प्रीवियस वन वी हैड डिस्कस द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट हम किसे कहेंगे, वह टेम्परेचर. Boiling point is that temperature where the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Similarly, यहाँ पे हम freezing point को elaborate करेंगे. How we can define the freezing point? Third point में हम freezing point को explain करेंगे. At the freezing point of the liquid, there is a dynamic equilibrium. There is a dynamic equilibrium between the liquid phase and solid phase. Means it is that temperature where both the liquid as well as solid phase they are existing. You can see here at this temperature, the liquid solvent and the frozen solvent they are coexisting. And the next point here, at the this freezing point only, the vapor pressure of the liquid vapor pressure of the liquid is equals to the vapor pressure, or I should write like this, vapor pressure of the liquid is equals to the vapor pressure of the frozen solvent. Okay, one and the same,
no problem. So what we are saying, at this particular temperature liquid solvent जो है उसका vapor pressure किसके equal हो जाएगा, frozen solvent के. So we are writing at the freezing point vapor pressure of the liquid solvent is equals to the vapor pressure of the frozen solvent. दोनों का vapor pressure एक ही हो जाएगा. And the fourth point, what you will write, if you will see the diagram or the graph, you can use the word डायग्राम के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं जो सॉल्यूशन का ग्राफ है इट इज ऑन द लोअर साइड. ओके, लोअर साइड क्यों है, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ अगर ये सॉल्यूशन जो है वही है 1 kg वाटर के अंदर, सपोज 1 मोल ऑफ NaCl हैज बीन एडेड. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर केवल वाटर था तो एट 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस हुआ टेम्परेचर इट फ्रीजेस. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फ्रोजन सॉल्वेंट, दैट मीन्स हमें आइस मिलेगी. अब आपने 1 kg वाटर में सपोज 1 मोल ऑफ NaCl यू हैड एडेड. नाउ अगर आप उसका टेम्परेचर लो करते जा रहे हो, अब देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो स्टिल इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. अगर इस सॉल्यूशन को फ्रीज होना है दैट मीन्स आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिक्रीज करना पड़ेगा. सो हम इसको क्या करेंगे, इसको टच करेंगे इस लाइन से. दैट मीन्स दिस ग्राफ हैज टू टच दिस फ्रोजन सॉल्वेंट. दैट मीन्स इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, हमारा लोअर हो गया. यहाँ का जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड एज TF. TF it is the freezing point of the solution. If the solution has to be frozen, then the temperature must be lowered so that its vapor pressure becomes equal to the vapor pressure of the frozen solvent, and it should coexist. It should coexist with the frozen form. Both the points should be there. Okay, वहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए फ्रोजन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में, और वहाँ पे वेपर प्रेशर भी दोनों का सेम होना चाहिए. सो द टेम्परेचर शुड बी लोअर्ड. वी कैन सी हियर इन द ग्राफ. सो वी कैन सी हियर कि TF नॉट क्या है, हमारा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड व्हेन इट हैज फॉर्म्ड द सॉल्यूशन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज lowered, and that is why we are using the term depression in freezing point. Okay, depression in freezing point, ये जो है इसके लिए देखो, फिर again I am saying you have to be very careful. Depression in freezing point del TF that is equals to which will be higher, TF naught or TF. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है, यानी प्योर का ज्यादा है. सो TF नॉट minus TF. Okay, now it is also having the same formula. Directly this depression in the freezing point, it is directly proportional to the molality of the solution. Okay, now to remove that proportionality constant, we had put some constant value, that is the Kf. And what is this Kf, students? Cryoscopic constant, or you can say molal depression constant. Okay, or you can also write it like freezing point depression constant. Students, please make one correction when we were discussing in the that elevation in boiling point. For KB, I had written the spelling EBB. Please make it correct. It is EBULLIO. Ebullioscopic. Okay, it is not ebullioscopic. Okay, so please make a correction over there. It is ebullioscopic constant. Now, del TF is equals to Kf dot m. Same way we are going to open the formula. Del TF is equals to Kf. Again we will write the molarity. Everybody knows N2 upon W1. Okay, so I am just writing the main formula only. N2 को हम open करेंगे W2 upon M2 W1 into 1000. I hope everybody remember what is W2. It is the mass of solute. What is M2? Molar mass of solute. What is W1? This is the mass of solvent. Okay, so here
using this formula you can calculate the M2 value or W1 or W2, whatever it is asked in the question. And Kf for water, Kf जो water का होता है it is 1.86, इसकी वैल्यू है. Kb की वैल्यू क्या थी 0.52 and Kf की वैल्यू होती है 1.86. Students, what will be the unit for this? If you will find out the value of Kf, that is moles per kg, so Kelvin kg per mole. Okay, so this is the unit. Again students, if I ask you what do you mean by cryoscopic constant or define cryoscopic constant, how you will define? Cryoscopic constant is equals to that depression in freezing point when Kf is equals to depression in freezing point when, yes, same way as we have defined ebullioscopic constant, when 1 mole of non-volatile solute, 1 mole of non-volatile solute is added to 1 kg of solvent. Clear? So, when 1 mole of non-volatile solute is added to 1 kg of water, then the depression in the freezing point is equals to the cryoscopic constant. Is it clear students? Now we will take one numerical from the in-text exercise. Okay, the question is calculate the mass of ascorbic acid, the vitamin C C6H8O6. Okay, ये हमारा क्या है? सीधा सा बेटा वैल्यूज डाल दो. C6H8O6, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है. डोंट गो कि ये क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है. डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है और एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूट है. सॉल्यूट को हम कंपोनेंट 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये हमारा क्या है, हमारा कंपोनेंट 2 है, यानी ये C, पहले हम फॉर्मूला निकले C6H8O6. तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? M2 कैलकुलेट कर सकते हो. M2 कैलकुलेट कर लो, इसका आ जाएगा 176. हाउ मच एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है? W2. ओके, इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. दैट मीन्स W1 हमारा कितना दे दिया? 75 ग्राम्स. एंड इट्स लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस. डेल TF दे दिया बेटा यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस. एंड KF वैल्यू दे दिया एसिटिक एसिड के लिए, इट इज 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें? W2 कैलकुलेट करना है. ओके, फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों. W2 हमें कैलकुलेट करना है. M2 it is given to us, W1 it is given to us, KF it is given to us, value of del TF it is given to us. Again students, I am saying you, when you are writing del, difference of the temperatures, then whatever the value it is given you can take it directly, चाहे वो सेल्सियस में है या फिर केल्विन में है, it is showing the difference. So just take it directly and use this formula and calculate the value of the W2. You will not find any difficulty. Simple calculation you have to make. So be conscious when you are doing the calculations. So in this way we had completed with the third colligative property, depression in freezing point. Students, now we are left with only the last property, that is osmosis and osmotic pressure, that we will discuss in the next class. Meanwhile, keep on doing the questions.